सांगू राहिले. Today we will study about the affinity chromatography. Firstly, we will see the introduction. Applies the principle of fraction separation procedure. It is a non-instrumental analysis which partition component between two phases, usually mobile phase, which is the movable, and a stationary phase is constant. It's non-movable. Based on the difference in component physical properties, can separate complex mixture composed of many very similar components. Chromatography is often coupled with an analytic instrument to complete analysis. A single chromatography analysis can isolate, identify and quantitate multiple component of mixture. यानी affinity chromatography से हम बहुत सारे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू फेज, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज में जो सॉल्यूशन है वो मूव होगा और स्टेशनरी फेज में वो कांस्टेंट रहता है. History of chromatography. In 1903, the twist Russian botanist coined the term chromatography. He passes plant tissue extract through a chalk column to separate pigment by differential absorption chromatography. In 1915, R. M. Winstead, the German chemist, Nobel Prize for similar experiment. So now we'll see the principle of chromatography. Chromatography is used when there is a difference in the retention time of different components. So two types of phase, stationary phase which is the constant and mobile phase is the movable. The properties of chromatographic properties immiscible, stationary and mobile phase. ये दोनों phase mix नहीं होती. An arrangement where a mixture is deposited at one end of the stationary phase. तो हम एक मिक्सचर को वन एंड ऑफ द स्टेशनरी फेज में अप्लाई करते हैं. द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज टू द अदर एंड ऑफ स्टेशनरी फेज. और जो मोबाइल फेज के जो सॉल्यूशन हो गए वो स्टेशनरी फेज तक क्या हो गए, मूव हो गए. द डिफरेंट रेट ऑफ पार्टीशन ऑफ फॉर ईच कंपोनेंट मीन्स विजुअलाइज द सेपरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट. तो हमें डिफरेंट क्या मिलेगी, बैंड मिलेगी. द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट बायोमोलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर नेट सरफेस चार्ज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होते हैं. आयन क्रोमेटोग्राफी more generate form allows separation of ions and polar molecule based on charges property of the molecule. The affinity chromatography is the purification of biomolecule with respect to the specific binding of that biomolecule due to the chemical structure. Though the column one of the properties bind to the ligand on the basis of specificity and high affinity, they fit together like a lock and key. So this is the ligand and this bead and this ligand bind to this substrate. This is the competing protein and either the target protein by introducing another protein that will compete to bind with the ligand. The other protein in the solution washed through the column because they were not able to bind to the ligand. तो जो प्रोटीन हो गए पर्टिकुलर वही लिगैंड को बाइंड हो गए और जो अदर प्रोटीन है उसको हम क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे. Principle. The affinity chromatography is one of the most diverse and powerful chromatographic method for purification of specific molecule or a group of molecule from complex mixture. से हमें जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सेपरेट करने हैं वो हम कर सकते हैं. It is based on highly specific biological interaction between two molecules such as interaction between enzyme and substrate, receptor and ligand, antibody and antigen. इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं. These interactions, which are typically reversible, are used for purification by placing one of the interacting molecule referred to as affinity uh, ligand onto a solid matrix. तो solid matrix यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी फेज है और ligand क्या है, which to create a stationary phase while a target molecule is in the mobile phase. तो जो molecule हमें purified करने हैं वो mobile phase में मिलेंगे और बाकी के कहाँ मिलेंगे हमें, stationary phase पे. Many of the commonly used ligand coupled to affinity matrix are now commercially available and ready to use. Principle of affinity. This is the matrix ligand and this is the saccharose. Okay, and this the immobilized ligand. Immobilized ligand plus sample complex. This is the impurities. And this is the complex and this is the purified sample. तो पहले क्या होगा, मैट्रिक्स लिगैंड को बाइंड होगा तो ये इमोबलाइज होगा, तो ये क्या होगी, स्टेशनरी फेज होगी. अब ये स्टेशनरी फेज में हम क्या डाल रहे हैं, सैंपल डाल रहे हैं. तो सैंपल कहा जाएगा, सैंपल रहेगा मोबाइल यानी वो मूव होगा. दिस इज द कॉम्प्लेक्स और उसको ये सैंपल बाइंड हो गया.
और जो इम्प्योरिटी थी वो अलग रहेगी, केवल सैंपल ही उसको बाइंड हो गया मूवमेंट से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टेशनरी फेज प्लस उसको जो फिर हमने क्या किया कि स्टेशनरी फेज से जो मोबाइल पार्टिकल है उसको अलग कर दिया। दिस इज द प्यूरिफाइड सैंपल। A matrix in its use here is a substrate, usually in beads form to which a specific ligand is covalently bound. In order for the matrix to be effectively, it must have certain characteristics. It must be insoluble in solvent. Solvent में हो soluble नहीं होना चाहिए. Buffer employ in this process. तो generally हम stationary phase के लिए buffer use करते हैं. It must be chemically and mechanically stable. It must be easily coupled to as ligand or aspect arm onto which the ligand can be attached. Ligand क्या है फिर मोबाइल फेज. It must be exhibit good flow properties and have relatively large surface area for the attachment. So here the proteins to be purified. This is the insulin receptor and this is the ligand. This is the insulin. This is the agarose bead. So ये क्या है स्टेशनरी फेज है. ओके और हमें क्या करने हैं इंसुलिन को सेपरेट करना है. The mixture of proteins salt and a contaminant. The ligand can be selective only after the nature of the macromolecule to be isolated is known. When a hormone receptor protein is to be purified by affinity chromatography, hormone itself ideal candidate of the for the ligand. यानी हार्मोन क्या है स्टेशनरी फेज है और जो उसको बाइंड होगी ligand वो क्या है मोबाइल फेज, यानी जो हमें चाहिए. फॉर एंटीबॉडी आइसोलेशन एंटीजन और हैपन में बी यूज एज ligand. यानी अगर हमें एंटीबॉडी सेपरेट करनी है तो हम स्टेशनरी फेज में लिगैंड क्या यूज करेंगे एंटीजन. इफ एन एंजाइम इज टू बी प्यूरिफाइड अ सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिटर कोफैक्टर इफेक्टर में भी यूज एज इमोबलाइज लिगैंड्स. तो स्टेशनरी फेज में हम ये यूज कर सकते हैं अगर हमें एंजाइम सेपरेट करनी है. The overlap between two molecule and bit surface may prevent the binding between of ligand and the target molecule. This is the target molecule, ligand, and this is bit. The spacer arm ensure that the target molecule has full access to the ligands. तो ये क्या है स्टेशनरी फेज है ब्लू वाला और ये क्या है ligand. Attachment of ligand to matrix. Several procedures have been developed for the covalent attachment of the ligand to the stationary phase. All the procedure for get modification proceed in two separate chemical steps. Activation of the functional group on the matrix and joining of ligand to the functional group of matrix. A wide variety of activated gate is now commercially available. The most widely used it describes in the following. This is the high ionic strengthen buffer, hydrophobic group ligand and low ionic strengthen buffer. The matrix for ligand attachment. Spacer arm used to bind ligand to matrix and ligand molecule that bind reversibly to specific target molecule of the interactions. सो एंटीजन क्या है यहाँ पे स्टेशनरी फेज और हमें क्या चाहिए एंटीबॉडी क्या रहेगी मोबाइल फेज में. एंटीबॉडी के लिए हम उल्टा अगर हमें एंटीजन सेपरेट करना है तो एंटीबॉडी क्या करेंगे हम स्टेशनरी फेज में एज अ लिगैंड यूज करेंगे, उसको क्या बाइंड होंगे एंटीजन. सिमिलरली अगर सबस्ट्रेट क्या है स्टेशनरी फेज और एंजाइम क्या है मोबाइल फेज में, अगर हमें एंजाइम सबस्ट्रेट करना है तो इसका अगर सबस्ट्रेट करना है तो इसका उल्टा करेंगे. डीएनए से हमें हिस्टोन सेपरेट करना है तो डीएनए इज द स्टेशनरी फेज एंड हिस्टोन इज द मोबाइल फेज. हार्मोन stationary phase and binding protein is the mobile phase. Add mixture to the column, discard flow through. Add wash to column, discard flow through. Add elution buffer to column, retain flow through. तीन मेथड से हम ये क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं. Add a mixture to batch to the bind target molecule. Remove mixture. Add wash buffer. Remove wash buffer. Add elution buffer. Remove elution and retain. Use of affinity chromatography. Purified and concentrate substance from a mixture into buffering solution. Reduce the amount of substrate in a mixture. Discern what biological compound bind to particle substance such as drug. Purify and concentrate enzyme solution. Advantage of affinity: extremely high specificity, high degree purity. The process is very reproducible. The binding site of biological can be simply investigated. Disadvantage: expensive ligand, leakage of ligand, degradation of solid support, limited lifetime, non-specific absorption, relatively low productivity. Application it used for the isolation, purification of biological macromolecule. It used to purify nucleic acid, antibody, enzymes. To notice which biological compound bind to a particular substance, to reduce the amount of substance in a mixture. Use genetic engineering, nucleic acid purification
production of vaccine, antibody purification from blood serum, and basic metabolic research, protein enzyme cell separate extract.